Today we'll start with payroll management. Also, whatever topics you are unaware right now, I'll make sure that I give you brief introduction while I'm taking the class of payroll management. Kyunki HR you have not been introduced to right now, so there are many topics that comes from HR directly, but you're not aware of it right now, but briefing I'll keep doing. Fine? Okay? Yes. So let's start with payroll management. What is payroll management? Payroll management is the process of giving salaries to the employees of an organization. Okay? Payroll management, write down. Payroll management is the process of paying salaries to the employees of the organization. To the employees of the organization. It starts with making a list of the employees, making the list of employees, and ends with recording their expenses. And ends with recording their expenses. Okay, should I repeat? Or you've written? Repeat? You're writing? You want me to repeat? Okay. Payroll management is the process of paying salaries to the employees of the organization. It starts with making a list of the employees and ends with recording their expenses. Recording their expenses. ठीक है? अब समझो, ये सिर्फ डेफिनेशन था. Yes, ma'am. पेरोल मैनेजमेंट का मोस्टली हम जब पेरोल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, पेरोल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि the entire process of giving salary to the employees. ठीक है? हाँ. एम्प्लॉयज में जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी देने का जो प्रोसेस है वो होता है पेरोल मैनेजमेंट. अब पेरोल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ठीक है, पहले ये जान लीजिए कि व्हाई इज पेरोल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें एचआर डिपार्टमेंट होगा. यस मैम. जिसमें नेम सम डिपार्टमेंट्स. प्रोडक्शन होगा, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हम कह सकते हैं. फैक्ट्री है तो वेयर हाउस होगा. क्वालिटी चेक कंपनी है तो क्वालिटी एश्योरेंस होगा, क्वालिटी चेक होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ब्ला 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 ब्ला. देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स एंड देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट. हर एम्प्लॉय अलग अलग कैटेगरी में फॉल करेगा. ठीक है, एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एक नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर से लेकर के एक जीएम तक होगा. राइट? और सिमिलरली हर डिपार्टमेंट में वहां पर प्यून भी काम करेगा, चपरासी भी काम करेगा, वहां जनरल मैनेजर भी काम करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 50,000 एम्प्लॉयज. ठीक है, इतने एम्प्लॉयज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में. इन सब का पेरोल में क्या क्या आता है सुनो. पेरोल का मतलब सैलरी. तो क्या सैलरी ऐसे ही बनती है आपकी मंथ में? पहले आपका बेसिक पे जोड़ा जाता है. आप कितने अलाउंस के लिए एंटाइटल्ड हैं? सिर्फ आप इंडिविजुअली. हो सकता है आप सेम डिपार्टमेंट में काम करते हो बट यू बिलोंग टू डिफरेंट कार्डर्स, यू बिलोंग टू डिफरेंट हायरार्कीज. Okay, in that case your allowances are going to be different. If you are working in city X, your same allowance like HRA allowance will be different from the person who's working in the same hierarchy as you but in different city. हाउस एंड अलाउंस के लिए क्या बताएंगे, सब कुछ डिटेल में बताएंगे. अभी बस
इंट्रोडक्शन समझो कि ये पढ़ना है डिटेल्स में, हर एक पॉइंट का आपको इंट्रोडक्शन करवाना है पेरोल में। अलाउंस के लिए सबका अलाउंस अलग अलग होगा। अगर आप नीचे तबके के एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, the benefits given to you will be lesser than the benefits which are given to a general manager. Yes, ma'am. Right? Yes, there are more benefits being given to a general manager or the people of higher up in the hierarchy of an organization, right? Yes, ma'am. Obviously, then you might be on leave for 10 days and your peer might not be. और अगर वहां लीव विदाउट पे का सिस्टम है, जनरली क्या होता है कि कोई कंपनी जब आपको हायर करती है ना, तो जैसे कि वेयर आई वाज वर्किंग, ठीक है, वहां पे ये प्रोविजन था कि फॉर 1 year till you cross the probation period there will be provision for 1 year, after that you are confirmed for that organization. Same. No. Then what happens? Here there are no unpaid leaves, unpaid leaves and no paid leaves. Okay, that is why that's a wrong concept. Where I was working, it was a pharmaceutical company, and I was working in quality control department. Fine. So what happened there? That for 1 year till you are confirmed from your probation period, you are on leave without pay. Means if you take leave for 2 days, your 2 days salary will be cut. But when you are confirmed, you can take that part of your leave. ठीक है, अगर 40-42 छुट्टी जितनी जो होती है छुट्टी का, CL, SL, EL बहुत टाइप की छुट्टी होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अपना अपना सिस्टम है छुट्टी लेने का, तो वहां जब आप कंफर्म हो जाते हैं देन यू कैन टेक योर पार्ट ऑफ लीव, आप सिक लीव ले सकते हैं, योर पे विल नॉट बी डिडक्टेड. So imagine there are people in the organization which fall under provision period, होंगे probation के नीचे होंगे, जिनका हर दिन का लीव विदाउट पे LW पे का सिस्टम चलता होगा, चलेगा. ये एक पार्ट, एक कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज में. फिर दूसरा कैटेगरी जो प्रोविजन होंगे जिनका है, उन्होंने कितनी सिक लीव ली, उन्होंने कितना कैजुअल लीव लिया, क्या वो किसी काम के लिए sabbatical पे हैं? You know what sabbatical? You know that's a holiday given by this. It's not holiday. It's a leave given by an organization for different purposes. So say for example, the good organizations they give you sabbatical for study, higher studies, or for motherhood if you want to take leave for some time, sabbatical is given. You're doing PhD, then you know for all those purposes sabbatical is given. So temporary off from the service. तो इतने एम्प्लॉइज होंगे, उनके बेनिफिट्स अलग होंगे, उनका अलाउंस अलग होगा, उनको जो फैसिलिटीज दी जाएंगी वो अलग होगा, लेकिन सबका कैलकुलेशन करके तो सैलरी बनती है, राइट? सब कुछ का कैलकुलेशन, कोई हाफ डे गया होगा, उसके हाफ डे की सैलरी जानी होगी, यहाँ पे सिस्टम में हाफ डे का, ठीक है, इफ यू लीव फॉर हाफ डे योर हाफ डे सैलरी इज कट. सो ऑल दीज, तो सैलरी जो बना रहा है वो मेरा डेटा मेंटेन कर रहा है ना वहाँ, और ऐसे सारे फैकल्टीज का डेटा मेंटेन हो रहा है. सिर्फ फैकल्टीज क्यों, जो नीचे काम करते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन के में सपोर्ट कर रहे हैं, या सपोर्टिंग स्टाफ्स, सबकी सैलरी बनती है. व्हाट आई मीन टू से इज कि सैलरी बनाना इज अ cumbersome task. Fine, it's not as simple as it sounds. To maintain the database of every employee, to maintain what all leaves they have taken, what all benefits they are availing, what all allowances they are entitled for, what all basic pay cadre they fall in, their salary is calculated. Now say there are 50,000 employees in an organization. Imagine calculating every single detail about salary structure for 50,000 students. Is it an easy task? No. If giving payroll, is it easy if you do it manually? No. That is why we study payroll management.
basically payroll management is giving salary to the employees, to all its employees in the organization. Okay, and we use software. These days we have payroll software. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ये सॉफ्टवेयर बहुत एक्सटेंडेड वैरायटी का भी होता है. ऑनलाइन स्विच ऑन योर वीडियोस. बहुत सारे वैरायटीज का ये सॉफ्टवेयर आता है और ये सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं और जो इनको चलाते हैं, the people who run these software are skilled people. Okay, are skilled people. Generally ये HR डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन क्योंकि जब आप सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा कि नहीं? You must be falling in some or the other tax slab. Yes, right? आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा. टैक्स का कैलकुलेशन इंडिया में the tax system is very complicated and it is very complex. It's not that simple. Okay, there are many deductions, there are many exemptions. Then if you have certain exemptions, you can avail those facilities. If you belong to certain strata of the society, if you बहुत सारा चीज है टैक्स में, लेकिन हर आदमी का टैक्स कैलकुलेशन होता है अपने अपने हिसाब से. यानी कि इन अ वे उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है. ये पेरोल मैनेजमेंट का काम है कि पेरोल में आपका टैक्स भी डिस्प्ले किया जाए. ठीक है, आपका टैक्स भी डिस्प्ले किया जाए. मतलब इस टैक्स को कैलकुलेट करने में क्या होगा? इज इट अ सिंपल प्रोसेस? नो. कॉस्ट अकाउंटेंसी लगेगी आपकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगेगा आपका, टैक्सेशन कैलकुलेशन लगेगा इसमें. इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में पेरोल मैनेजमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है. समझ में आई बात? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, बट फॉर मोस्ट ऑफ देम दिस इज डन बाय एचआरएम. इसीलिए हम लोग it basically comes under HRM, but since it involves the taxation policies, the cost accountancy, the taxation slab and calculation of all of your taxation, so sometimes in some organization it is undertaken by finance department, but mostly it is an HRM process. Why we call it an HRM process? Because say for example what? I'm बोल रही हूँ ना. You're behaving kiddish in the class. Now फिर से बोलो. Say for example. आप 2-3 बार बोल रही हो. हमको लगा कि हम लोग को बोलने के लिए आप बोल रही हैं. इतनी सीरियस बात कर दी. That questions you ask. These departments, they carry on their work. Fine. If there is, why we say that it is an HRM process, because there are various activities which are carried on by the HR department of an organization. But for people of payroll management to understand it, to keep records of it, they have to maintain the records. ठीक है, जैसे कोई एम्प्लॉय अगर फ्रेश रिक्रूट है वहां पर और इसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है. There's a fresh recruit, there's a fresher who's just joined the organization, and you have to give salary to this person. You have to maintain all the records. Not only HRM, but payroll management department will also maintain this record. Will it maintain or not? Unless and until it maintains, how will it calculate its salary? There are several activities like these which are carried on by payroll department, and that is why we mostly rate it as an HRM function. Okay, like अब के टाइम पे पेरोल का सॉफ्टवेयर इतना एक्सटेंडेड हो गया है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल भी इससे मेजर किया जा सकता है. दिस ऑल्सो बिकम्स एन इंडेक्स or metrics for performance of an individual. Generally companies में क्या होता है कि आप रात में, आप शाम तक में जो अपना काम खत्म किए, अपनी ड्यूटी में आपने अपना काम खत्म किया, and then you feed into the system what all you completed the entire day. One copy of it goes to your senior, and the other copy, senior means the whoever you're supposed to report to,
and the other data goes to the payroll software. It gets stored there automatically. Okay. For recording. And at the end of the year, if an organization wants to see the list of people, दोनों चीजों में अगर उसको कोई बहुत important task undertake करना है organization को, and he wants to find out his best employees, he'll just look at it, the data, and he'll find out that he has been consistent, he has been good enough to be given this task, right? On the contrary, this payroll software, which can measure performance appraisal, this will also be a metric for measuring which person is not up to the mark, right? Which person is not up to the mark, which person needs training. अगर आप up to the mark नहीं है तो organization क्या काम करेगी? आपको train करेगी, right? You will be trained that you need training, and then you will improve, and then your working efficiency, and then you will improve, right? तो इसलिए पेरोल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब आप लोग बताइए डस्टर, अब आप लोग बताइए कि पेरोल का क्या क्या फंक्शन हो सकता है. अगर उसको उसी तोड़ के देखो कि अगर मैनुअल वर्क किया जाता है और पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं हो तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. What would be the repercussion? इम्प्लीमेंट चेक करने में भी इश्यूज आएंगे, डेटा रिकॉर्ड करने में. किस टाइप का प्रॉब्लम? Say this 50,000 employee is being done manually. What now? बताओ. कैलकुलेटिव प्रॉब्लम आएगा. Very good. Inaccuracy हो सकता है. What you're trying to say is inaccuracy. Write down. प्रॉब्लम इन मेजरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल हम तुमको इसलिए बताए, ये तुम लिखो मत. Performance appraisal I told you because these days payroll softwares are coming which also measure performance appraisal, right? So payroll is not basically for performance appraisal क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को और एडवांस करते जा रहे हैं, इसलिए performance appraisal is a new addition to it, right? Basically आप जोड़ेंगे तो आप देखिए कि पेरोल मैनेजमेंट की मैनुअल काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है. इनएक्यूरेसी हो सकती है. You will need a lot of people to do that. इतना ह्यूज डेटा को मेंटेन करने में you need so many people. Cost time taking, more workforce, cost टाइम. ठीक है, इतना टाइम जाएगा. सबसे बड़ी बात है कि इनएक्यूरेसी हो सकती है और कॉस्ट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. We need a lot of people to maintain that record. Inconvenience, yes, inconvenience. Management pressure you can't say. Why would you say management pressure? Because I'm saying that if you're not using the software, you need those many people to maintain. It's not possible to keep every single detail because अभी के टाइम पे HR की एक्टिविटीज को भी पेरोल से लिंक कर दिया गया है. पेरोल इज नॉट जस्ट फॉर सैलरी स्ट्रक्चरिंग. देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज व्हिच आर आल्सो लिंक्ड विद पेरोल. दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज एन HRM टास्क मोस्टली. ठीक है, he is trying to say managing people is not easy. That comes under cost, one and time. पेरोल मैनेजमेंट हम लोग 4 कंपोनेंट में पढ़ेंगे. मोस्टली विल स्टडी इट अंडर 4 कंपोनेंट्स. उस 4 कंपोनेंट्स में बहुत सारा पॉइंट्स है. एक एक करके इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर दोस पॉइंट्स. ओके, पेरोल मैनेजमेंट को मोस्टली पढ़ने के आसानी के लिए 4 कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे. बेसिक पे and salary,
राइट सैलरी। फिर बेसिक पे, अलाउंस, डिडक्शंस, डिडक्शंस एंड ये सैलरी का पार्ट आएगा, ठीक है। जब हम सैलरी पढ़ेंगे पेरोल मैनेजमेंट में, ये पूरा का पूरा सैलरी, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है आप लोगों को, बहुत कुछ। इसमें कंप्लायंस वगैरह भी, लीगल कंप्लायंस वगैरह भी पढ़ाना है। सैलरी, डिडक्शंस एंड योर इनकम टैक्स। Okay, income tax. Have you heard about gross pay, net pay? Gross profit, net profit. नहीं, सब HRM पे आ जाइए। It is individual like gross profit. It's not profit, हम सैलरी की बात कर रहे हैं। ग्रॉस पे, ठीक है। जैसे देखो, नेट मतलब सारे एक्सपेंस को भी IT, ग्रॉस पे में मैम सारे बेसिक पे और मैम नेट पे मिला के सारे पे expense को बनता है काट कि जो होगा वो नेट। वही IT डिक्लेरेशन है इसमें, ठीक है। I'll erase this. ये सारे पॉइंट्स लिखिए, इसको अब क्लासेस में इसी को इलैबोरेट करना है, पूरा पेरोल इसी स्ट्रक्चर पे पढ़ाना है। आप समझ में आएगा, ठीक है। ग्रॉस पे, वो 4 कंपोनेंट लिखा, Yes, ma'am. राइट। ग्रॉस पे, see, okay, write down declaration, IT declaration, yes. मैम इंसेंटिव बोनस अलाउंस में है नहीं, पूरी सैलरी में आएगा। सैलरी का पूरा कंपोनेंट पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सैलरी स्टार्ट करेंगे। ये स्ट्रक्चर है, आप लोग को मिल गया। अब जितना पढ़ाएंगे, ये जो एक एक पार्ट देख रहे हो, इसी पे ऊपर होगा। जैसे बेसिक सैलरी है, 2 क्लास के लगभग लगेगा सैलरी पढ़ाने में, या 1 क्लास में भी वगैरह। थ्योरी रहता है ना, प्रैक्टिकल हो गया जैसे क्वेश्चन है बस थ्योरेटिकल है। ये तो सब प्रैक्टिकल है। एवरीथिंग दैट इज Calculation नहीं नहीं, कैलकुलेशन यू डोंट हैव टू डू, यू डोंट हैव टू डू। इट्स एन एड ऑन कोर्स ना, यू डोंट हैव टू गो इनटू कैलकुलेशंस। आप एचआरएम में जाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे वो, तो उसमें इसका वो सब पार्ट तो इसमें इजी फॉर अस ना। हां, कंप्लीटली सैलरी तो पढ़ना ही होगा एचआरएम वालों का। एचआरएम आप ही पढ़ाएंगे ना। हां, ठीक है, हो गया, लिख लिए। हाँ, ओके। नाउ यू राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स फॉर टुडेज क्लास। ये हो गया, ये स्ट्रक्चर आपने लिख लिया। अब लिखिए थोड़ा सा है इसका। Write down functions of payroll management. Making salaries according to structure, making salaries according to individual structure,
मेकिंग सैलरीज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड कीपिंग, नेक्स्ट, वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ पे डेटा, रिकॉर्ड कीपिंग, record keeping, verifying the reliability of pay data, verifying the reliability कि pay data कितना reliable है, reliability of pay data. Next, delivering payroll checks, delivering payroll checks, maintaining compliance with tax laws, maintaining compliance with maintaining compliance with tax laws, laws LAWS, laws. Next, recording paperwork for new hires, recording paperwork for new hires, जो नए लोग आते हैं उनका पेपर वर्क मेंटेन करना. Done everyone? Yes, ma'am. Edits existing employee files, edit existing employee files, Next, calculating reimbursements, bonus, overtime, and holiday pay. Holiday pay. Okay, done. Next you write. No. Did you write that advantages of payroll management? No, write down. Advantages of this, what you wrote right now was functions of. Okay, now you write advantages of payroll management. 1, ठीक है, cost cutting, accuracy, accurate होना, accuracy, time efficient, avoiding rework, फिर से काम करवाना, अगर गलत होगा तो फिर से काम होना होगा ना. Avoiding rework and stress, and last, right, employee satisfaction. Employee satisfaction. Why did you write this employee satisfaction? कैसे एम्प्लॉय पेरोल, अगर पेरोल मैनेजमेंट अगर इनएफिशिएंट रहे या वीक रहे तो कैसे क्या होगा?
क्यों एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा? के माइंड में डाउट रहता है कि मेरा अटेंडेंस बना या नहीं बना। वेरी गुड, यस, दिस इज द रीजन कि अगर किसी एम्प्लॉय को अपना सेटिस्फाइड से उसकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है, कोई डाटा मिस हो जाएगा तो फिर हाँ, वो कोई डेटा अगर मिस होता है तो, और स्पेशली अगर सैलरी स्ट्रक्चर में तुम्हारी सैलरी में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, तो एम्प्लॉय विल ऑलवेज बी डाउटफुल, राइट? एम्प्लॉय विल ऑलवेज बी डाउटफुल, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, वो साइकोलॉजिकली खुश नहीं रहेगा उसके मैनेजमेंट से, राइट? और उसको लगेगा कि एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी बेस्ड, सिस्टम बेस्ड, व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड मैन्युअली, और इट इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय अ सॉफ्टवेयर, बाय some technology, so it has to be correct, right? Yes. So employees will be more satisfied. Write down, star mark करके लिखो 2-3 points. Since payroll also includes taxation and tax slabs, since payroll also includes taxation and tax slabs, and tax slab, SLAB, tax slab. So sometimes finance department takes care of it. Takes care of it. But modern software links HR activities write down, but modern software links various HR activities, including performance appraisal, so mostly HR department takes care of it. HR department takes care of it. Next paragraph में लिखो, integrating HR activities. Next लिखो, this is just for your understanding so that you have a record of what you have studied, right? Whichever way you want to. Integrating HR activities and payroll. Integrating HR activities and payroll can reduce paperwork, comma, allow automatic updating and reduce difficulty in providing consolidated reports. Difficulty in providing consolidated reports. Okay? Done? Write down some of the combined activities of payroll plus HR. Payroll plus HR. These are the combined activities of payroll plus HR. Payroll plus HR. Right. Recruitment. Point. Recruitment. Salary increment. Salary increment.
bonus payment, benefit deduction, benefit काट दो, only deductions, vacation leaves, okay, right, vacation leaves, and last point, are you done everyone? Firing employees, firing employees, bracket में लिखो separation, हाँ, क्या separation लिखते जाओ, recruitment हो गया, ठीक है. If payroll does not get processed at time, अगर payroll सही से process नहीं होता है time पे, will it not be an HR issue? An unhappy person will create an HR task to solve it. So payroll and HR activities are mostly combined. We see it as two interchangeable terms. Payroll is something to do with the HR function of an organization. ठीक है? Okay? Thank you, class.